और वाजपेयी जी ने जो जो भी मुद्दे चुने इंटरनेशनल फोरम में बात करने के लिए, स्तर पे बात करने के लिए, रखने के लिए, आज भी मोदी जी ने जो टॉपिक्स चुने होंगे वो चुनिंदा टॉपिक्स होंगे जिस पर ना सिर्फ भारत अमेरिका रिलेशंस पे असर पड़ेगा लेकिन पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। और वो जरूर उन मुद्दों को छेड़ेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पर टिप्पणी देंगे जिन मुद्दों पर पूरा विश्व इस वक्त अपनी आंख बिछाए बैठा है। बहुत ही इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आज अपने संबोधन में किस प्रकार से, किन शब्दों से, किस टोन से, किस लहजे से और कितनी फोर्सफुली अपनी बात रख पाते हैं मोदी जी, और फिर उसको अमेरिका में किस प्रकार से लिया जाता है और पूरे विश्व में उसकी क्या चर्चा हो रही है, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। ये वाकई इनका इनका आज का जो भाषण है, ये जो संबोधन है, ये जरूर पूरे विश्व में अपना। जी, आपको क्या लगता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में अमेरिका शुमार है, यहाँ की संसद कितनी शक्तिशाली है वो सभी के सामने है। दोनों सदन हैं, दोनों सदन की कई खास बातें हैं, दोनों सदन कई मामलों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं, दोनों के पास अपने अपने अधिकार भी हैं। वहां पर संयुक्त सत्र को संबोधित करना भारतीय Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. मोदी जी संसद में प्रवेश कर रहे हैं और देखिए लोग Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. Mr. Speaker, Madam Vice President, distinguished members of the US Congress, ladies and gentlemen, Namaskar.
It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. I see that nearly half of you were here in 2016. I feel your warmth as old friends. I can also see the enthusiasm of a new friends in the other half. I remember Senator Harry Reid, Senator John McCain, Senator Orrin Hatch, Elijah Cummings, Elsie Hastings, and others who I met here in 2016 and who are sadly no longer with us. Mr. Speaker, standing here 7 Junes ago, that is the June when Hamilton swept all the awards, I said that the hesitations of history were behind us. Now, when our era is at a crossroads, I am here to speak about our calling for this century. Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel.
It is a Thursday afternoon, a fly-out day for some of you. So I'm grateful for your time. I also know how busy you have been this last month. Being a citizen of a vibrant democracy, myself, I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. I'm happy to help out. I'm happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There will be and there must be a contest of ideas at home. But we must also come together as one when we speak for our nation. And you have shown that you can do it. Congratulations. Mr. Speaker, the foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embraced people from around the world, and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I'm told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians.
we pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. We also remember many others who work for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means that truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker, last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity.
We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. Every 100 miles, our cuisine changes from dosa to aloo paratha, and from Srikhand to Sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. I see that. Curiosity in this house too. We were honored to receive over 100 members of the US Congress in India over the last decade. Everyone wants to understand India's development, democracy, and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I'm happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. After all, we are 1/6 of the world's population. In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same.
Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. It means together for everyone's growth, with everyone's trust and everyone's efforts. Let me share with you how this vision is translating into action with speed and scale. We are focusing on infrastructure development. We have given nearly 40 million homes to provide shelter to over 150 million people. That is nearly 6 times the population of Australia. We run a national health insurance program that ensures free medical treatment for about 500 million people. 500 million people, that is greater than the population of South America. We took banking to the unbanked with the world's largest financial inclusion drive. Nearly 500 million people benefited. This is close to the population of North America. We have worked on building digital India. Today, there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. This is more than the population of Europe. We protected our people with 2.2 billion doses of made in India COVID vaccines. And that too free cost. I may be running out of continent soon, so I will stop here. Distinguished members, the Vedas are one of the world's oldest scriptures. They are a great treasure of humanity composed thousands of years ago. Back then, women sages composed many verses in these Vedas. And today, in modern India, women are leading us to a better future. India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Nearly 1.5 million elected women lead us at various levels. And that is of local governments. Today,
women serve our country in the Army, Navy, and Air Force. India also has the highest percentage of women airline pilots in the world. And they have also put us on Mars by leading our Mars mission. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. Empowering women transforms the nation. Mr. Speaker, India is an ancient nation with a youthful population. India is known for its traditions, but the younger generation is also making a hub of technology, be it creative reels on Insta or real-time payments. Coding or quantum computing, machine learning or mobile apps, fintech or data science, the youth of India are a great example of how a society can embrace latest technology. In India, technology is not about innovation, but also about inclusion. Today, digital performance are empowering the rights and dignity of people while protecting privacy. In the last 9 years, over 1 billion people got a unique digital biometric identity connected with their bank accounts and mobile phones. This digital public infrastructure helps us reach citizens within seconds with financial assistance. 850 million people receive direct benefit financial transfers into their accounts. 3 times a year, over 100 million farmers receive assistance in their bank accounts at the click of a button. The value of such transfer has crossed $320 billion. And we have saved over $25 billion in the process. If you visit India, you will see everyone is using phones for payments, including street vendors. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India. Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in a revolution of opportunities. Farmers check weather updates. The elderly get social security payments. Students access scholarships. Doctors deliver telemedicine. Fishermen check fishing grounds, and small businesses get loans with just a tap on their phones. Mr. Speaker, a spirit of democracy, inclusion, and sustainability defines us.
It also shapes our outlook to the world. India grows while being responsible about our planet. We believe Mata Bhumihi Putro Aham Prithviya. This means the earth is our mother and we are her children. Indian culture deeply respects the environment and our planet. While becoming the fastest growing economy, we grew our solar capacity by 2,300%. Yes, you have heard right. 2,300%. We became the only G20 country to meet its Paris commitment. We made renewables account for over 40% of our energy sources, 9 years ahead of the target of 2030. But we did not stop there. At the Glasgow summit, I proposed Mission Life, lifestyle for environment. This is a way to make sustainability a true people's movement. To live it, to be the job of governments alone. By being mindful in making choices, every individual can make a positive impact. Making sustainability a mass movement, we help the world reach the net zero target faster. Our vision is pro-planet progress. Our vision is pro-planet prosperity. Our vision is pro-planet people. Mr. Speaker, we live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. Our engagement with the world is for everyone's benefit. The one sun, one world, one grid seek to join us. All is connecting the world with clean energy. One Earth, One Health is a vision for global action to bring quality health care to everyone, including animals and plants. The same spirit is also seen in the theme when we chair the G20, One Earth, One Family, One Future. We advance the spirit of unity through yoga as well. Just yesterday, the whole world came together to celebrate the International Day of Yoga. Just last week, all nations joined our proposal at the UN to build a memorial wall to honor
the peacekeepers. And this year, the whole world is celebrating the International Year of Millets to promote sustainable agriculture and nutrition alike. During COVID, we delivered vaccines and medicines to over 150 countries. We reach out to others, doing disasters as first responders, as we do for our own. We share our modest resources with those who need them the most. We build capabilities, not dependencies. Mr. Speaker, when I speak about India's approach to the world, the United States occupy a special place. I know. Our relations are of great importance to all of you. Every member of this Congress has a deep interest in it. When defense and aerospace in India grow, industries in the state of Washington, Arizona, Georgia, Alabama, South Carolina, and Pennsylvania thrive. When American companies grow, their research and development centers in India thrive. When Indians fly more, a single order for aircrafts creates more than 1 million jobs in 44 states in America. When an American phone makers invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. When India and US work together on semiconductors and critical minerals, it helps the world in making supply chains more diverse, resilient, and reliable. Indeed, Mr. Speaker, we were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. Today, India and the US are working together in space and in the seas, in science and in semiconductors, in startups and sustainability, in tech and in trade, in farming and in finance, in art and artificial intelligence, in energy and education, in healthcare and humanitarian efforts. I can go on and go on, but to sum up it, I would say the scope of our cooperation is endless. The potential of our synergies is limitless. And the chemistry in our relations is effortless. In all this, Indian Americans have played a big role.
They are brilliant in every field, not just in spelling bee. With their hearts and minds, talent and skills, and the love for America and India, they have connected us. They have unlocked doors. They have shown the potential of our partnership. Mr. Speaker, distinguished members, every Indian Prime Minister and American President of the past has taken our relationship further. But our generation has to honor of taking it to greater heights. I agree with President Biden that this is a defining partnership of this country because it serves a larger purpose: democracy, demography, and destiny give us the purpose. One consequence of globalization has been to cover over concentration of supply chains. We will work together to diversify, decentralize, and democratize supply chains. Technology will determine the security, prosperity, and leadership in the 21st century. That is why our two countries established a new initiative for critical and emerging technologies. Our knowledge partnership will serve humanity and seek solutions to the global challenges of climate change, hunger, and health. Mr. Speaker and distinguished members, the last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Mr. Speaker, the dark clouds of coercion
and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. Connected by secure seas, defined by international law, free from domination, and anchored in ASEAN centrality. A region where all nations, small and large, are free and fearless in their choices, where progress is not suffocated by an impossible burdens of debt. Where connectivity is not leveraged for strategic purposes, where all nations are lifted by the high tide of shared prosperity. Our vision does not seek to contain or exclude, but to build a cooperative region of peace and prosperity. We work through regional institutions and with our partners from within the region and beyond. Of this, Quad has emerged as a major force of good for the region. Mr. Speaker, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker, COVID-19's biggest impact was the human loss and suffering it caused. I wish to remember Congressman Ron Wright and the staff members who lost their lives to COVID. As we emerge out of the pandemic, we must give shape to a new world order. Consideration, care, and concern are the need of the hour. Giving a voice to the global South is the way forward. That is why I firmly believe that the African Union be given full membership of G20. We must revive multilateralism and reform
multilateral institutions with better resources and representation that applies to all our global institutions of governance, especially the United Nations. When the world has changed, our institutions too must change, or risk getting replaced by a world of rivalries without rules. In working for a new world order based on international law, our two countries will be at the forefront as partners. Mr. Speaker and distinguished members, today we stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. As the young American poet Amanda Gorman has expressed, when day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we are brave enough to see it. Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। If I were to say it in English, it would be rising its head in the skies, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun has just risen, armed with a deep resolve, overcoming all the odds to dispel the forces of darkness. The sun has just risen. Mr. Speaker and distinguished members, we come from different circumstances and history, but we are united by a common vision and by a common destiny. When our partnership progresses, economic resilience increases, innovation grows, science flourishes, knowledge advances, humanity benefits.
our seas and skies are safer, democracy will shine brighter, and the world will be better place. That is the mission of our partnership. That is our calling for this century. Mr. Speaker and distinguished members, even by the high standards of our partnership, this visit is one of the great positive transformation. Together, we shall demonstrate that democracy is better and democracy deliver. I count on your continued support to the India-US partnership. When I was here in 2016, I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Thank you once again, Mr. Speaker, Madam Vice President, and the distinguished members of this honor. God bless America. Jai Hind. Long live India-US friendship. Thank you. और पीएम मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, कहीं से भी ये फर्क महसूस नहीं हुआ कि ये भारत की संसद नहीं है। उसी तरीके से हर बात पे तालियों की गड़गड़ाहट, खड़े होकर अभिवादन करना, और ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद की, जहां दोनों सत्रों को संबोधित किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो एक एक बातें हैं वो अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। और देखिए, नाम नहीं लिया लेकिन सीधा सीधा जरूर ये कह दिया कि किस तरह से आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए सख्त लहजे में कहा, 9/11-26/11 की घटनाएं याद की और कहा आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ साझा तौर पर लड़ना होगा। मुंबई हमले का जिक्र किया, जिसके बाद भी आतंकवाद का खतरा बरकरार हुआ है। दुनिया के लिए आतंकवाद और कट्टरता बड़ा खतरा है, ये कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहा। और साथ ही ये वक्त युद्ध का नहीं, बातचीत से समाधान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए इस संबोधन का सामने आना, इन शब्दों का सामने आना, यह बताता है कि हिंदुस्तान हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और वो ये चाहता है कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत ही समाधान है। और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक, अमेरिकी सांसद इस वक्त पीएम का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये कितनी ताकतवर तस्वीर है। अमेरिकी सांसद भी मुरीद है पीएम मोदी के, इस बात की बानगी। अभी तक आपने सिर्फ देखा था प्रवासी भारतीय ही चाहते थे कि ऑटोग्राफ ले, लेकिन ये जो मिलने का सिलसिला है, ये जो संवाद अदायगी का सिलसिला है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन अब हम इन तस्वीरों के साथ लौटेंगे तमाम उन बातों पे जिसका जिक्र और जिसको दोहराना बहुत जरूरी है। 9/11 जिसने अमेरिका को जख्म दिया, 26/11 जिसने भारत को जख्म दिया, और यही दो ऐसे वक्त हैं जिन्होंने हमेशा हमें एक साथ लाया आतंकवाद के मसले पर। यानी जब भी आतंकवाद पे आवाज उठानी हो, उस आवाज में भारत अगर आवाज उठा रहा है तो अमेरिका ने साथ दिया, और अगर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है तो भारत ने साथ दिया। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत की मिसाल वाली तस्वीर देखिए। पीएम मोदी तमाम अमेरिकी सांसदों से घिरे हुए, अभी भी वो अमेरिकी संसद भवन के अंदर ही हैं, और वहां पे सांसद सभी बातचीत कर रहे हैं। यानी पहले जो प्रोटोकॉल के तहत मिलने और संवाद करने का तरीका था, उससे ठीक अलग अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ सब एक एक करके बातचीत भी कर रहे हैं।
और अपने संबोधन में बहुत सी अहम बातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पटल पर सामने रखी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है, हिंदुस्तान में है। भारत की 15 महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। पिछले 9 साल का भी जिक्र किया उन्होंने। पिछले 9 साल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 1 अरब लोगों को तकनीक से जोड़ा गया, 10 करोड़ किसानों के खातों में पैसा पहुंचाया गया, यानी कि किस तरह से किसानों की व्यवस्था में सुधार किया गया। 85 करोड़ लोगों को डीबीटी से पैसा मिल रहा है। हम धरती को मां समझते हैं। भारत में सस्ता इंटरनेट भी बड़ी क्रांति है, यह भी उन्होंने कहा। और तकनीक का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। कहा कि तकनीक से समाज आपस में जुड़ रहा है, इंटरनेट का फायदा हर भारतीय तक पहुंच रहा है, हर भारतीय को मिल रहा है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं फिर इनका जिक्र इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि अभी से पहले बहुत सारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं। कई प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी संसद को संबोधित भी किया है, लेकिन ऐसी तस्वीर मुझे लगता है कि अपने आप में इकलौती है जब तमाम सांसदों से घिरे हुए प्रधानमंत्री सबको ऑटोग्राफ देते हुए। एक जरा सा भी सामान्य बात नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। एक प्रवासी भारतीय का पीएम मोदी का मुरीद होना और एक अमेरिकी सांसद का मुरीद होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो हम विश्व नेता कहते हैं अगर पीएम मोदी को, अगर हम एक कहते हैं कि दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है जिससे कि आने वाले वक्त के नेताओं को उसे क्रॉस करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें इस लिहाज से कि शायद उस तरीके से अपनी छवि को बनाना, अपने कद को ऊंचा करना होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कहानी बयां करती हुई ऐतिहासिक ऐसी ही तस्वीरों को कहा जाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, यह भी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनके एक एक शब्द को पूरा विश्व बेहद ध्यान से, बेहद गौर से यहां पर सुन रहा था। और यही वजह है कि सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और उन्होंने इस दौरान कहा कि हम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने पिछली शताब्दी को इसका जिक्र किया और कहा कि जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो इसने कई दूसरे देशों को औपनिवेशिक शासन से खुद को मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। एक मिसाल के तौर पर इस सदी में जब भारत बेंचमार्क स्थापित करेगा और विकास करेगा तो ये कई देशों के लिए और भी देशों के लिए ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपना विजन भी सामने रखा। साफ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास आप देखिए आज किस कदर उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया है कि अमेरिकी संसद जो है वो उनके पास आकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गर्मजोशी से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिल भी रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जरा सी भी थकावट नहीं, जरा सी भी शिकन नहीं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उन्हें देख रहा है, उनके एक एक शब्द को सुन रहा था। और जो अमेरिकी सांसद है उनसे मिलने के लिए कितना तैयार बैठे थे, वो जानते थे कि ये मौका आएगा जब पीएम मोदी का संबोधन समाप्त होगा और उसके बाद वो उनसे बातचीत करने का ये खास मौका यहां पर पा सकेंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपनी विचारधारा भी रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र एक संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति को पंख देती है। लोकतंत्र का खुले तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जिक्र यहां पर किया है, लोकतंत्र की मजबूती को बताया है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और इसी लोकतंत्र को बेहद बारीकी के साथ आज विश्व में हिंदुस्तान की ताकत के तौर पर पीएम मोदी ने रखा। और जिस देश के बारे में ये कहा जाता है, इसे दोहराया है पीएम मोदी ने कि लोकतंत्र की जननी है भारत। क्यों ना ऐसे लोग जो कि भारत के मुरीद हैं। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अमिताभ, जो तस्वीर इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि अपने आप में इकलौती तस्वीर है। आप बेहतर तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे। अमेरिकी सांसद ऑटोग्राफ और सेल्फी लेते हुए पीएम मोदी का। देखिए, जो देश की जनता देख रही है, मैं खुद यहाँ इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठकर देख रहा हूँ ये। और प्रधानमंत्री अभी भी सांसदों से घिरे हुए हैं। और
एक ऐसा अद्भुत भाषण था जो 40 मिनट का भाषण, जिसमें 16 बार प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका संबंधों की बात की, मजबूत होते संबंधों की बात की, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का जिक्र किया, यूक्रेन युद्ध के चलते जो ग्लोबल साउथ पर फूड सिक्योरिटी का असर हो रहा है उसका जिक्र किया, और कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स को सामने आना चाहिए। इस पर भी सारे सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो इसमें प्रधानमंत्री ने बातें तो बहुत सारी कही है, जिसको हम लोगों ने सिलसिलेवार हम उसको कह सकते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य मुद्दा रहा है, मैं आपको कह सकता हूं, वो प्रधानमंत्री का यूक्रेन का जिक्र करना था। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि उसके चलते उस इलाके में बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं, और इसमें तमाम शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसके परिणाम बड़े भयंकर होते जा रहे हैं, जिसका असर उन गरीब देशों पर हो रहा है जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की कि सारे लोगों को मिलकर इस युद्ध को बातचीत करके रोकना चाहिए, जिसको तमाम लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। जो भी यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेट के सांसद थे, तमाम एम्बेसडर्स थे, सब ने अपनी सीटों पर खड़े होकर मेजें थपथपाई, तालियां बजाई हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। तो 16 बार अपने 40 मिनट के भाषण में अगर स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, अमेरिका के साथ जब संबंध भारत के बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है, रक्षा सहयोग है भारत और अमेरिका के बीच, वो इस सदी में बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, और अमेरिका भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन गया है। इस समय भी अमेरिकी सांसदों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई। तो प्रधानमंत्री का भाषण जो था, इसमें संदेश भी बहुत था, इसमें हास्य का पुट भी था। प्रधानमंत्री के भाषण के स्पीच के दौरान कई बार लोगों की हंसी भी निकली है, और लोगों ने तालियां भी बजाई जब प्रधानमंत्री ने भारत का वर्णन किया कि हमारे देश में 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। प्रधानमंत्री ने वहां के सांसदों को बताया कि 20 से ज्यादा पार्टियां हैं जो तमाम राज्यों में राज कर रही हैं। दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं भारत सरकार के अंतर्गत, हजारों डायलेक्ट्स हैं, लेकिन पूरे भारतीय एक भाषा में बोलते हैं। और जब उन्होंने बोला कि जब भारत में हर 100 मील पर खाना बदल जाता है, खाने का स्वाद बदल जाता है, उन्होंने डोसा से आलू पराठा, शिखंड से संदेश की बात की। तो सारे सांसदों को, क्योंकि अब भारत की डेलिकेसीज को लेकर सांसद कभी अब अनजान नहीं रहे हैं, छूते नहीं रहे हैं। तो ये भारत के लिए प्राउड मोमेंट था, और प्रधानमंत्री ने किसी भी सांसद को निराश नहीं किया। यहाँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जब मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए जो लोग खड़े रहे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेसमैन जॉन लेविस को भी ट्रिब्यूट दिया, तब भी यहाँ उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो उनको इतनी ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, प्रधानमंत्री को मिलना, ये बड़े गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री ने भी किसी सांसद को, किसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हो चाहे सीनेट के हो, पूरी कांग्रेस को निराश नहीं किया है। स्टैंडिंग ओवेशन थे, क्लैप्स थे। जो दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय थे, उन्होंने मोदी के नारे, हर बड़ी बात पर मोदी के नारे भी यहाँ लगते हम लोगों ने सुने। तो मुझे लगता है कि एक फलदायी दौरा रहा है प्रधानमंत्री को, और कांग्रेस जो अमेरिकी जनता है उनको ये पसंद है विट और ह्यूमर से भरा हुआ भाषण, और प्रधानमंत्री का भाषण इनसे पूरी तरह से भरा था। जब उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका जो है उससे भी जी अमिताभ जी, बस इसी सवाल पर हम आने वाले थे। पूरी दुनिया अब तक AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ही जानती थी, और चीन की काट के लिए, क्योंकि चीन इस पर हमेशा से आगे रहने की ही फिराक में रहा है, इसलिए वो लगातार इसमें आगे बढ़ भी रहा है। वो जानता था कि अगर दो शक्तिशाली देश इस पटल पर मिलेंगे तो AI को लेकर पक्का अब उसकी क्लास जरूर लगेगी। अब वो अगर मजबूती हिंदुस्तान के पास आती है, अमेरिका और साझेदारी के साथ में हिंदुस्तान की, तो चीन के लिए बड़ी मुसीबत होगी। और क्या कहेंगे, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तौर पर AI की एक नई परिभाषा, एक दमदार परिभाषा रख दी है, अमेरिका इंडिया। बिल्कुल यही संदेश तो कांग्रेसमैन चाहते थे यहाँ पर, कि अमेरिका और इंडिया क्या साझेदारी है। और न्योता क्या था, भारत को प्रोजेक्ट करना। न्यू इंडिया क्या है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके साथ साथ ये भी प्रोजेक्ट करना था कि आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए भारत ने क्या रखा है। ये दोनों बातें प्रधानमंत्री ने बखूबी सामने रखी हैं सारे कांग्रेसमैन के सामने, और
बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम जो जो में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा कदम है भारत और अमेरिका की बढ़ती पार्टनरशिप का। तो इस लंबे भाषण में मुझे लगता है कि संदेश भी काफी थे और अमेरिकी कांग्रेसमैन का अमेरिकी लोगों के लिए काफी वो पल भी काफी अमेरिकन कांग्रेसमैन को ये कहना भी अमेरिकन कांग्रेसमैन को ये कहना भी अमेरिकन कांग्रेसमैन के लिए ये कहना भी वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमेरिकी कांग्रेस के लोग अब प्रधानमंत्री को जिस तरह से घेरे और जिस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन दिया है वो जाहिर है वो खुश हैं। और प्रधानमंत्री जब भाषण समाप्त किया है अपना, उस समय गॉड ब्लेस अमेरिका का है, वो भी काफी सांसदों को अंदर तक डर कर गया। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा असर रहा है प्रधानमंत्री के भाषण का अमेरिकी कांग्रेस पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सांसद हों या फिर सीनेट के सांसद हों। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है अमिताभ, हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। 2:51 भारत में हो चुके हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं। लेकिन जो दर्शक इस वक्त भी हमें देख रहे हैं, पीएम मोदी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए जरा अब अगला कार्यक्रम, अगला प्रोग्राम अगर आप बता सके। देखिए, अब अगला कार्यक्रम उनका व्हाइट हाउस में है, जो स्टेट बैंक्वेट है, जो राजकीय भोज पर राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने बुलाया है, वो सबसे बड़ा अहम है। और वहां पर क्या खाना परोसा जाता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो स्टेट डिनर है, उसमें काफी लोग आने के लिए उत्सुक थे। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि ये बड़ी मुश्किल की घड़ी उनके लिए पैदा हो गई है। तो ये तो मुझे लगता है कि अब ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। आज सुबह से जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष, भारत का पक्ष, सब कुछ बहुत तरीके से और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिसे पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर मैसेज टू अमेरिका एंड वर्ल्ड ये कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ये प्रधानमंत्री का अगला जो डिनर है वो ये दर्शाएगा कि राजकीय जो निमंत्रण था, जो स्टेट डिनर है, जो स्टेट गेस्ट है, वो कितना मायने रखता है, वो भारत के पड़ोसी देशों को कितना संदेश देता है। अमिताभ जी, क्या कुछ आप कहेंगे? All faiths and respects all faiths, and of course needs to work towards doing that. It was a well-received speech. Thank you, sir. Thank you. तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस की दोनों सदनों को संबोधित करना इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज तो हो गया है। ये वर्तमान की तस्वीर है जो एक मजबूत भविष्य की तरफ कई कदम आगे बढ़ाती हुई, नई उड़ान, नई ऊंचाइयों को लेती हुई नजर आती है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में माना भी कि अमेरिका और भारत की ये दोस्ती अमर है। किस तरह से दुनिया की कई संस्थाओं में बदलाव आ रहे हैं, G20 में अफ्रीका को भी जगह मिले, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और एक कामयाब अध्यक्षता भारत ने अब तक G20 की है। SU की अध्यक्षता भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हिंदुस्तान के नेतृत्व में गोवा में की गई, वो तस्वीर भी दुनिया भर ने देखी। लेकिन आतंकवाद, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा यहां पर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी आपके सामने। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैपिटल हिल पहुंचे, सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका शानदार स्वागत किया। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों ने कैसे पीएम का न सिर्फ स्वागत किया गर्मजोशी के साथ, बल्कि ऐसे दिखाया कि वो सभी पीएम मोदी के फैन है। फोटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स, ये सभी लेना, और ये सब एक एक तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और वाकई पीएम ने भी इत्मीनान दिखाया, यानी बारी बारी से सबसे मिलते भी रहे। अमेरिकी पत्रकार के भारत में मानवाधिकार के सवाल पर पीएम मोदी का करारा जवाब। कहा, भारत के डीएनए में लोकतंत्र, भारत में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का सवाल ही नहीं। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का किया राजकीय स्वागत। प्रधानमंत्री ने बाइडेन का जताया आभार, कहा 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान।
Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर दस्तखत। लड़ाकू विमानों के लिए भारत को तकनीक देगा अमेरिका। अब भारत में ही बनेंगे लड़ाकू विमानों के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने की कई आपसी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। पीएम के भाषण ने किया अमेरिकी सांसदों पर जादू। पीएम ने आतंकवाद से लेकर अमेरिका से आपसी सहयोग तक के उठाए मुद्दे। पीएम के भाषण के बीच सांसदों ने 15 बार दिया स्टैंडिंग ओवेशन। न्यू आइडेंटिटी and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट किया ग्रीन डायमंड। जो बाइडेन को भी सोने का सिक्का और गणेश की चांदी की मूर्ति तोहफे में दी। बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया कैमरा। पीएम मोदी के स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस तैयार। डिनर में बाजरे की बनी खास डिश होंगी शामिल। खुद जिल बाइडेन कर रही हैं देखते। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. Exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister. Modi ji is our hero of our nation. पीएम मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम कैपिटल हिल पहुंचे, वहां सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए और पूरा अमेरिकी संसद मोदीमय नजर आया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भी सेनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पीएम ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती पर बात की, भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड पर अपनी बात यहां पर की, फोकस में इसे रखा और बहुत से मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात वैश्विक पटल पर पूरी दुनिया के सामने रखी, जिसमें आतंकवाद का मुद्दा उन्हें उठाया। कहा कि किस तरह से आतंकवाद कट्टरता सबसे गंभीर है, आज भी ये बरकरार है, इसका मुकाबला किस तरह से करना होगा। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी सांसदों से यहाँ मिल रहे थे, उत्साह यहाँ पर अमेरिकी सांसदों का नजर आया। वो ऑटोग्राफ लेते नजर आए, हस्ताक्षर उनके लेते नजर आए, ताकि इस यादगार लम्हे को वो हमेशा के लिए कैद कर सके। तो एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई ये तस्वीरें बताती हैं कि ये सभी जो अमेरिकी सांसद हैं वो पीएम मोदी के मुरीद नजर आए। कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, तो कोई सेल्फी खिंचाने की कोशिश, तो कोई चाहता था कि हम हाथ तो मिला लें कम से कम। और ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरों में से एक है। लेकिन अब सवाल घूम फिर कर वही आता है कि पीएम ने जो बड़ी बातें कही उसके क्या मायने हैं। और देखिए इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र एक संस्कृति है और विचार और अभिव्यक्ति को पंख यहां पर देती है। भारत को लोकतांत्रिक भावना के विकास में अनादिकाल से ऐसे मूल्य का सौभाग्य प्राप्त है। ये अहम बातें, बेशकीमती बहुमूल्य शब्द जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की गरिमा को लेकर सामने रखे। और यही वजह रही
गई कि हिंदुस्तान की इस गौरवशाली गाथा के सामने अमेरिकी सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन देखो कितनी बार यहां पर दिया, यानी कि खड़े होकर यहां पर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, हिंदुस्तान का किया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 15 दफे ऐसा हुआ। गर्मजोशी से स्वागत, उसके बाद इत्मीनान से पीएम को सुनना और जिस बात पर दिल आया दिल खोल कर तालियां बजाना, यही देखा हमने अमेरिकी सांसदों को करते हुए। ये एक एक करके हम तस्वीरें आप तक इसलिए भी पहुंचा रहे हैं ताकि इन तस्वीरों की चर्चा आने वाले वक्त में अगर हो तो आपको भी ख्याल रहे कि भारत के प्रधानमंत्री की वजह से देश के 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। और देखिए, सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के समुदाय के जो लोग हैं, उत्साह सिर्फ उनमें ही नहीं बल्कि अमेरिकी सांसदों का ये उत्साह देखिए, अमेरिकी सांसदों के अंदर की ये दिलचस्पी देखिए कि किस तरह से वो पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए भी उत्सुक नजर आए। And terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. It is a Thursday. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. It is a Thursday. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. I first visited the US as a Prime Minister. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th
largest economy. And India will be the third largest economy soon. और ये पीएम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों के बीच की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों की चर्चा अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन जो हमें देखकर समझ में आ रहा है वो यही कि सबकी भावना पीएम मोदी के लिए एक ही तरह की है, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या फिर अमेरिकी सांसद। सब चाहते हैं कि पीएम से हाथ मिला ले, सब चाहते हैं कि पीएम का ऑटोग्राफ ले ले याद के तौर पे, और सब चाहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए। यानी विश्व नेता के तौर पे पीएम अब स्थापित हो चुके हैं। देखिए, यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो उन्हीं यादों को तरोताजा कर देती है। और यही वजह है कि सेल्फी के जरिए, फोटो के जरिए इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने की कोशिश। तो अमेरिकी संसद की ये सबसे खास तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया और उसके बाद वहां मौजूद सांसदों के साथ देखिए बातचीत की, क्योंकि ये वही सांसद है जिन्होंने 15 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उन्हें अभिवादन किया और ये बताया कि वो किस कदर उनके साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन यहां पर दे दिया और इसी के साथ विश्व को बता दिया कि हिंदुस्तान की सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। मानवाधिकार के सवाल पर पीएम की दो टुकाई सामने। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत में जाति धर्म पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। दरअसल ये उस वक्त पीएम ने कहा जब एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे सवाल किया धर्म जाति को लेकर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक करके पूरे विश्व को ही ये संदेश दे दिया। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर।
और इससे पहले पीएम का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को यहां 21 तोपों की सलामी दी गई। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए समारोह के दौरान कई हजार प्रवासी भारतीय अमेरिकी देश के अलग अलग हिस्सों से मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के गगनभेदी नारे लगते रहे। और यहाँ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा की बेहद खास तस्वीरें सामने आई और 4 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी बात की तस्दीक करती है कि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत ने किस तरह से आज मजबूती के साथ अपने आप को उस मुकाम पर काबिज कर लिया है जिसकी हर उम्मीद हर हिंदुस्तानी कर रहा था। व्हाइट हाउस में स्वागत किस तरीके से पीएम का हुआ और भारत का राष्ट्रगान यहां जब बजा तो हर भारतीय के लिए यह गौरव का क्षण था। दूसरी तस्वीर यह बताती है कि बाइडेन के साथ जो मीटिंग 40 मिनट तक चलनी थी वो मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली। वहीं भारत यूएस का साझा बयान जब सामने आया तो मालूम चला कि किस तरह से ये दोस्ती और ज्यादा मजबूती के साथ एक मजबूत उड़ान भरती हुई सामने आई। सबसे बड़ी डिफेंस डील, सबसे बड़ी मेगा डील की भी बात सामने आई और यूएस संसद में जो स्वागत हुआ उसकी तस्वीर यकीनन देखते ही बन गई। क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की
माइक्रॉन, गूगल तथा अप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। आई सी दैट। तो पीएम मोदी की एक बड़ी बात आप सुन रहे थे। व्हाइट हाउस में स्वागत की तस्वीरें, स्वागत इस तरीके से जब दुनिया के ताकतवर दो चेहरे एक फ्रेम में नजर आए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन। दूसरी तस्वीर, जब बाइडेन के साथ मुलाकात हुई तो सबको उम्मीद थी कि भारत में निवेश के लिए रास्ता किस तरीके से तैयार है, वो वाकई हो चुका है, वो ख्वाब भी पूरा हो गया। और इन चारों तस्वीरों के जरिए महाशक्तियों का वो महामिलन नजर आ रहा है, जिसे पूरी धरती ने देखा, हर उस देश ने देखा जो ये अब जान चुका है कि आखिरकार हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को किस तरह से महाताकत में तब्दील कर लिया है, किस तरह से वो सुपर पावर वाला देश बन चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। वो संबोधन सामने आया जिसने आज हर किसी का दिल जीत लिया। और इस दौरान सीनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन भी किया। India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Ladies and gentlemen, Namaskar. It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. And terrorism still remains a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time
energy, effort and travel. It is a Thursday. विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी अपने कदम रखे, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व जब भी किया, वहां भारतीय समुदाय में एक अलग उत्साह देखने को मिला। वहां के जनप्रतिनिधियों के जरिए जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, वो वाकई ये बताता है कि किस कदर हिंदुस्तान की ताकत ने उस बुलंदी को छुआ है जिसकी उम्मीद हर हिंदुस्तानी ने की। और देखिए, ये 4 तस्वीर भी उसी की तस्दीक करते हैं। व्हाइट हाउस में शानदार भव्य स्वागत किया गया और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी संसद पहुंचने लगे, उनका खड़े होकर बार बार 15 बार अभिवादन किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात रही कि आप सबसे शक्तिशाली एक ऐसे संसद में जाते हो जहां का अपना 200 साल से भी ज्यादा पुराना का इतिहास है। वहां सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ वासियों का है। और एक एक करके तस्वीरें भी हम दिखाते जा रहे हैं आप तक। और बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम ने इंडो पैसिफिक का भी जिक्र किया। ये वो मसला है जिस पे भारत हमेशा से चीन को लेकर जो उसका रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं है और ये अच्छे से मालूम है इन दिनों अमेरिका को भी। अमेरिका चूंकि चीन से तब से ज्यादा बौखलाहट में है जब चीन का रुख रूस की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, रूस की तरफ झुकाव उसका ज्यादा हो गया है और ये बातें कहीं ना कहीं खल रही है। ये पश्चिमी देशों का रूस का जो विवाद चल रहा है उसमें बहुत सारे पेच है, उसको बड़े स्तर पे ले जाके हम अलग वक्त में समझाएंगे भी आपको। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से हमारा फोकस है आतंकवाद को लेकर। 9/11 और 26/11 ये 2 ऐसे मसले हैं जब भी जिक्र होता है तो आतंकवाद पे सबकी आंखें गर्म हो जाती है। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ हुए जेट इंजन की डील को ऐतिहासिक करार दिया है और इस मेगा डील के तहत अमेरिका की कंपनी जीई भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देगी। जेट इंजन बनाने पर ऐतिहासिक करार हो चुका है। यूएस भारत को तकनीक मुहैया कराने वाला है। करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का